Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please do like, share and subscribe. Today we will start chapter number 2, Polynomials Introduction Part 2. Today's our first topic is zero of a polynomial. Then what is the zero of a polynomial? A real number k. We have to take one real number k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is equal to 0. Now we'll understand this defined through one example. We'll take example 1. First of all, we have to take one polynomial p of x is equal to x square minus 3x plus 2. Now we have to take k is equal to one real number and we will take k is equal to 1 as a real number. So next step what we have to do, we have to prove that p of k is equal to 0 here. So we will write p k is equal to 1, so we have to write x is equal to, we'll keep power outside, minus 3x plus 2. Now we have to put 1 instead of x. P of 1 is equal to, in polynomial also we have to put 1 instead of x. Remember that we have to keep power and sign and coefficient as it is. We cannot change that. We only have to put 1 instead of x. 1 square minus 3 is coefficient, so we have to keep it as it is, x, so we have to write 1 plus 2. 1 square 1 minus 3 ones are 3 plus 2. 1 minus 3 minus 2, because 1 is smaller number and 3 is bigger number, plus 2. Minus 2 plus 2, answer is 0. So here p of 1 is equal to 0. Here instead of k we take 1, so p of 1 is equal to 0, that is proved. So we can say that 1 is the zero of the polynomial p of x. Another thing that is we can say is, therefore x minus 1 is a factor of polynomial p of x. Why do we take here factor x minus 1? Because if we take x minus 1 is a factor, so we have to take is equal to 0. X minus 1 is equal to 0. Minus 1 is going into another side, so plus 1, so x is equal to 1. So in this way we can write x minus 1 is also a factor of polynomial. Now we'll take another example. Instead of 1 we will take over here 2. Then what will happen? Our polynomial p of x is equal to x square minus 3x plus 2. Now we have to take p of 2. 2 square minus 3 into 2 plus 2. 2 square 4, 3 2s are 6 plus 2. 4 minus 6 minus 2, because 4 is again small number and 6 is bigger number and we have to put sign of bigger number, plus 2 minus 2 0. So we can also say that 2 is also the zero of the polynomial, and here factor is x minus 2 is a factor of polynomial p of x. So this is the zero of the polynomial. Now on the basis of that we can say that we have here one note. We have to remember that number of zeros in a polynomial of degree n is at most n. What is the meaning of this? कि कोई भी polynomial होते हैं उसके कितने zeros होते हैं, हम कैसे बता सकते हैं? एज एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 1 लिया, 2 लिया, तो कैसे पता चलता है कि ऐसे कितने zeros होंगे? तो उसके लिए यहाँ पे ये नोट हमें याद रखनी है, नंबर ऑफ zeros इन अ polynomial ऑफ डिग्री n. polynomial की जितनी डिग्री होती है, एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जनरल में लिया है n इज एट मोस्ट n, तो उसकी कितनी होती है? जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है, उतने ही उसके जीरोज होते हैं. एज एग्जाम्पल वी सी हियर
here x raised to 2, 3x and 2. So here the power is 2, here the power is 1, this is the constant term. The highest power is 2. That means this equation is quadratic equation. And हमने पहले से ही सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2. तो इसके हाईएस्ट जीरोस कितने मिलेंगे 2, जो ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं. 1 is 1 and another 1 is 2. So please remember this note. Number of zeros in a polynomial of degree n is at most n. Now let us take another examples of this note. Now first of all, I have already taken linear polynomial. Y is equal to p of x is equal to ax plus b. This is the general form of linear polynomial. I have already drawn a graph. We have to check कि ये ग्राफ x को कितने पॉइंट में कट करता है. ओनली x एक्सिस को ही देखना है और कितने पॉइंट में कट करता है ये देखना है. तो ये ग्राफ है जो x एक्सिस को ओनली कितने पॉइंट्स पे कट करता है 1. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरो हो सकते हैं 1 जीरोस हो सकते हैं. नाउ वी गो फॉर अनदर ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. y is equal to p of x is equal to ax square plus bx plus c. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसका ग्राफ यहाँ पे हमने देखा है. दिस इज द x एक्सिस. ये x एक्सिस से फर्स्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कर रहा है सेकेंड पॉइंट पे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो हो सकते हैं 2 जीरोस हो सकते हैं. नाउ विल गो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. थर्ड वन y is equal to p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus b. Now we'll take this is the x axis, this is the first point, this is the second point and this is the third point. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो हो सकते हैं 3 जीरोस. तो ये आपको याद रखना है और ये इजीली आप याद कर पाएंगे. और इसके बेसिस पे हमें कुछ सम दिए हैं टेक्स्ट बुक में. पहले हम उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज 2.1. दैट इज द बेसिस ऑन दिस थियरी. चलो वील सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल में फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ओनली 1 पॉइंट. वाई एक्सिस पे हमें देखना नहीं है. तो जीरोस ऑफ दिस ग्राफ इज आंसर इज 1. नाउ विल गो फॉर सेकेंड वन. उस पर एक्स एक्सिस पे फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकेंड. वी ओनली हैव टू चेक ऑन एक्स एक्सिस, वी डोंट हैव टू गो फॉर वाई एक्सिस, रिमेंबर दैट. तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2. तो ये ग्राफ के कितने जीरोस हो सकते हैं 2 जीरोस. आंसर इज 2. नाउ विल गो फॉर थर्ड वन. थर्ड वन कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 1. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1. यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ओनली 1. तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 1. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने कर रहा है 1 2 3 4. तो आंसर इज 4. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है. तो जहाँ पे कोई भी ग्राफ आपको दिया हो जो एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच नहीं कर रहा हो, वाई एक्सिस पे करे या ना करे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. जो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 0. Get it? Okay, now we'll go for exercise 2.1. Exercise 2.1 first question है. The graph of y is equal to p of x are given in the figures below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. What we have to find? We have to find number of zeros. Remember that. Then we will go for the first question. In first question, graph is not touching to x-axis, then answer is 0. Second graph, x-axis पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, then answer is number of zeros is 1. We'll go for number 3, जो x-axis को first, second, third 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, then answer is number of zeros is 3. यहाँ पे देखते हैं x-axis को first and second 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, then answer is 2. Now we'll go fifth one. First, second, third, fourth. Then answer is 4. Now here 1, 2, 3. Then answer is 3. So this is our exercise 2.1 completed.
Now we'll see one more question that is not given in your textbook. This is the extra question but related to this theory. They can ask you in the board examination. So we will see what is the question. First of all, we will understand question very well and then we will do answer. Remember this technique. This will help you in board examination. Find the number of zeros lying between -4 and 4. This is our numbers -4 and 4 that we have to remember. -4 and 4 of the polynomial f of x whose graph is given. Graph is already given in question. Let's see graph. Okay, what we have to find the number of zeros. We have to find over here number of zeros lying between. दो पॉइंट्स हमें दिए जिसके बीच में ही हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं एंड दैट टू नंबर्स आर -4 एंड +4 और उसके बेस पे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो दो पॉइंट है उनके बीच में ही फाइंड करने हैं. ये दोनों नंबर हम ले सकते नहीं है बिकॉज हमें क्या बोला है बिटवीन -4 एंड 4. सो वी कैन टेक ओनली बिटवीन नंबर्स. वी कैन नॉट टेक -4 एंड 4. ओके, तो यहाँ पे अगर -4 एंड 4 के बीच में नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए दैट इज -3 -1 1 and 3 means 4 number of zeros. यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं 4. बट कौन से नंबर ऑफ जीरोस 4 है तो -4 एंड 4 के बीच में. अगर यही ग्राफ दे के आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर देयर देन वी कैन ऑल्सो टेक -5 एंड +5. देन टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर हमें पूरे ग्राफ में पूछे जाए तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 6. बट यहाँ पे हमें सिर्फ पूछा है कि यू हैव टू फाइंड बिटवीन -4 एंड +4. दैट्स वाई आवर आंसर is for remember this. Don't do mistake in this kind of easy questions. Okay, तो आई होप सो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल श्योरली सॉल्व all your doubts. Thank you.